बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूँ तो अफ़गानिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है दीगर पड़ोसियों की तरह, लेकिन पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान यूँ अहम हो जाता है कि बड़ी हद तक पाकिस्तान का अमन भी अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान इसलिए भी अहम हो जाता है कि अमरीका और मगरिब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक़ात की नौइयत का तयन भी इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात ही करते हैं। यूँ हम कोशिश करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी नज़र रखें, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के दौरान बावजूद हम अफ़गानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पे बात नहीं कर सके। इस दौरान अफ़गानिस्तान में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक तरफ अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में सदारती इंतखाबात हुए, और तीसरी तरफ इंट्रा अफ़गान डायलॉग के लिए यानी तालिबान और अफ़गान हुकूमत और बाकी सिविल सोसाइटी के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तैयारियां हो रही है। आज के जिरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीका और तालिबान के माबैन क्या तय पा रहा है, और जो कुछ तय पा रहा है उसमें अफ़गान हुकूमत किस हद तक इन्वॉल्व है और पड़ोसी ममालिक किस हद तक इन्वॉल्व है। इसी तरह हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के मुज़ाकरात या इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात कब शुरू होंगे और उसके कामयाबी के क्या इम्कानात है। तीसरी तरफ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने अभी तक क्या रोल प्ले किया है और अफ़गान हुकूमत उस रोल को किस नज़र से देखती है, और इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के ज़िमन में पाकिस्तान से किस तरह के किरदार की तवक्को की जा रही है। आज के प्रोग्राम में 3 अहम तरीन अफ़गान शख्सियात हमारे साथ होंगी। हमारे आज के जरगे में हमारे साथ शरीक होंगे डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल साहब, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर थे, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो बैकग्राउंड में पीस प्रोसेस में किसी भी दूसरी अफ़गान शख्सियत से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो तालिबान के साथ भी राब्ते में हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ भी राब्ते में हैं, और अफ़गान हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं, और कतर और मॉस्को में जो 2 नशिस्तें हुई थी उसमें बुनियादी कोऑर्डिनेशन भी उन्होंने की थी। इसी तरह एक और अहम शख्सियत वो भी हमारे साथ होंगी, हिज़्ब इस्लामी के अपने दड़े के रहनुमा हैं। वो भी मॉस्को अमन मुज़ाकरात का हिस्सा थे और साबिक मुशीर भी रहे हैं अफ़गान सदर के। लेकिन आगाज़ हम करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि गुज़िश्ता साल के दौरान मुख्तलिफ़ जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके दरमियान पीस प्रोसेस के हवाले से कोऑर्डिनेशन के लिए अफ़गान सदर डॉक्टर अशरफ गनी के खसूसी एलची भी थे। इससे पहले वो भी पाकिस्तान और ईरान में सफ़ीर रहे हैं, और इस वक्त वो डॉक्टर अशरफ गनी के इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज हैं। आप पहचान गए होंगे हमारे जरगे के पहले मेहमान जनाब मोहम्मद उमर दाऊद ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले ज़ाहिरी बात है कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल पे ज़्यादा असर तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात का मुरतब होगा, तो ये बताइए कि क्या ये तवक्को दुरुस्त है कि वो मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने को हैं और उनकी डील होने वाली है? Safi Saab, salam, and thank you for having me. It's great to see you again. My honor. And you know, in Afghanistan, I'm a great fan of Loya Jirga. In Pakistan, I'm a great fan of your Jirga. Thank you. Yeah, I'm honored. Thank you. Now, yes, since over the past 24 hours, some good news are coming that the US and Taliban has made enormous progress on agreeing to end the US-Taliban animosity. Now, I'm sure you remember that there were 4 points that the US had declared that nothing is agreed until there is agreement on all the 4 points. So what I'm assuming is that they must have agreed on all the 4 points. That's why they say they have made enormous progress. What the 4 points were? The 4 points, the first was severing ties or breaking ties with Al-Qaeda. Second one was a plan for U.S. Exit or departure of the U.S. forces. Third one was ceasefire, and fourth one was intra-Afghan dialogue.
So I'm sure there is understanding and there is progress on all the 4 points. That's why we all claim that there is significant progress. तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में बाकायदा मुआहिदा हो जाएगा तालिबान और अमरीकियों के माबैन? Yes, I think so. I can't say days, but maybe week or weeks that we will witness signing of an agreement between the US and Taliban. And at the same time, a communication between the US, a declaration between the US and the Afghan government from Kabul. लास्ट टाइम जब तालिबान और ज़ल्म खलीलज़ाद के माबैन मामलात तकरीबन तय पाए थे, लेकिन 2 प्रेसिडेंट उस पर खुश नहीं थे। एक अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और दूसरी तरफ अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने उस मामले को एक ट्वीट के ज़रिए वो वीटो कर दिया और वो प्रोसेस सारा ख़त्म। तो पहले ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा इस प्लान को वो सैंक्शन कर चुके हैं? Yes, I think he has sanctioned it, but conditionally. And I'm not qualified to specify those conditions, but conditionally he has sanctioned it. अच्छा, लेकिन आप क्वालिफाइड भी हैं और डॉक्टर अशरफ गनी के इंतहाई करीब भी हैं इन दिनों, तो डॉक्टर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत उसको एतमाद में लिया गया है? Yes, you remember about a month ago, while President Ghani was on a trip to UAE, United Arab Emirates, President Trump gave him a call and briefed him, and they had a 45 minutes conversation on the peace plan for Afghanistan and on the talks with the Taliban, I mean, between US and Taliban, and potentially between the Afghan government and Taliban. Subsequently, when President Trump visited Afghanistan, they had another extensive meeting and discussed the same matters. And now last night, Secretary Pompeo called Dr. Ghani and Dr. Abdullah and informed them of the main progress. Now a roadmap will roll out within the next few days. We will be witness to a roadmap that would specify when and how something can be signed between the US and the Taliban. मुश्किल मरहला शायद इंट्रा अफ़गान डायलॉग का है, तो कब इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू होगा और उसमें अफ़गान गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा और अफ़गान सिविल सोसाइटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? Yes, I think that was the difficult part in the past also, what you call it or we call it intra-Afghan dialogue, which is basically the talk between the Islamic Republic of Afghanistan and the Tehrik-e-Taliban. Now, who will represent the Islamic Republic of Afghanistan? That's not an easy question to answer. That's not an easy problem to settle. It takes efforts and energy, but I think now we are in a position to put that team together. The Ministry of Peace has worked in Kabul with all the credible political leaders and with civil societies to consult them on how to put together the team. Now, in terms of mechanism, I'm thinking, or rather I know that President Ghani wants to revive the Leadership Council for Reconciliation, which we put together last year, but because all our efforts were shadowed by election, by presidential election, it didn't take off. Now, as the election is almost over, it's almost behind us, it's time that that's revived. इलेक्शन ओवर हो चुका है, लेकिन आप उनके कैंपेन के इंचार्ज थे, लेकिन जो मुखालिफिन हैं वो रिगिंग के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो पहले ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर अशरफ गनी की मुद्दत ख़त्म हो गई है, इसलिए वो लेजिटिमेट नहीं है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात जितना अहम काम करे। अब अगर उनका इलेक्शन मुतनाज़ा हो तो फिर उस सूरत में क्या वो इस प्रोसेस को लीड कर सकते हैं? According to our law, a president is legitimate until a new president is elected and sworn in. Until that day, president is legitimate. This happened in the past, and this is happening now.
Now, that question doesn't arise. But as far as the question of rigging, accusation of rigging is concerned, unfortunately, in our part of the world, in our democracies, even the newest, this is the norm that nobody accepts the verdict of the Independent Election Commission because democracy is not entrenched, because that culture is not entrenched. So there are accusations. लेकिन टर्न आउट जितना कम रहा, सिर्फ 1.5 मिलियन लोगों ने वोट डाले. That's a different issue. It's not illegal. It is according to the law. The law doesn't specify that at least what percentage should come out. But there were reasons for it. That was also shadowed by the peace talks and also propaganda against election, that there will be no election, or if you come out, Taliban would attack. There were so many reasons that people didn't show up. And a lot of votes were invalidated because people didn't go through the biometric. They were not used to the biometric system. Women in rural areas didn't want to come out for voting because in the biometric they had to show their face. And you know, in our society, women don't in rural areas don't want to show their face. बज़ाहिर तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है अफ़गानिस्तान का, तालिबान उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है. वो वही अमीरुल मोमिनीन और खिलाफत और उसकी बातें कर रहे हैं. तो क्या आप लोग पुरुमीद हैं कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान एक मीटिंग पॉइंट तक आ जाएंगे? When Taliban were in power in Kabul, they were saying in 1990s up to 2001, they were saying we don't need a constitution, Quran is our constitution. But when I met them in January 2016, and my friends and colleagues have been meeting them afterward, they are saying no, the country does need a constitution, but the current constitution, they have serious reservations, and they want to either have a new constitution or drastically amend this. Now, we also support amendment of the constitution because constitution is a man-made आप लोग इसके लिए document. ओपन हैं कि तालिबान के साथ रिकन्सिलिएशन के खातिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? Yes, that's an opportunity because there are some other difficulties also we are facing with the constitution. That would be an opportunity to amend और it. उसके लिए अगर अबूरी हुकूमत बनानी पड़ी या तालिबान ने उसका मुतालबा किया, तो प्रेसिडेंट गनी क्या उस सूरत में फिर स्टेप डाउन होने के लिए तैयार होंगे? Interim government can be non-constitutional according to the current constitution. If somebody wants an interim government, then you have to amend the constitution first and then put a clause under what circumstances you can have an interim government. At present, that's non-constitutional. Now, as far as President Ghani's attitude is concerned, he had said many times that for peace and for sustainable peace in Afghanistan, even if his life is needed, he would not hesitate to give his life, which means he can go to extremes for peace. अच्छा दाऊदी साहब, हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में खून तो अफ़गानों का बह रहा है, कांदा अफ़गानों का इस्तेमाल हो रहा है, सरज़मीन अफ़गानों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अमलन जंग मुख्तलिफ़ ममालिक की प्रॉक्सीज़ का होता है. तो ये जो पीस प्रोसेस है, इसमें क्या किसी स्टेज पे ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान वगैरह इनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है? और अगर नहीं तो क्या वो लोग अपने कंसर्न्स की खातिर या अपने इंटरेस्ट की खातिर इस प्रोसेस को सबूताज नहीं कर सकेंगे? Well, our future strategy, or rather our current strategy, is 3 tiers. The first one is to build national consensus amongst the Afghans that lives under the flag of the Islamic Republic. And the second part is the regional consensus or regional coordination on peace in Afghanistan. And the third one is international consensus and support. Now, we have the international consensus and support. We need to work on regional, and we need to work on national. Now, those countries that you mentioned within the region, I think almost all of them want peace in Afghanistan, and they want a central role for the people of Afghanistan in that peace process. As you mentioned, I was President's special envoy
building that consensus within the region, and I went around almost all countries in the region. I found every country was cooperative. They had absolutely no reservation. But as far as that other statement of yours is concerned, that the war in Afghanistan is proxy, that argument we do not use anymore, because one side of the war is the Afghan National Defense and Security Forces, which is a constitutionally legitimate force, and they are representing people of Afghanistan and they are protecting people of Afghanistan. Now, if the other side can be called as a proxy of some countries in the region, that may be the case, but the Afghan state side is not proxy to any country. अच्छा, चले वो प्रॉक्सी नहीं है अगर स्टेट साइड जो है, लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ अब कतर प्रोसेस में, अमेरिकन ने भी पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया, हाई लेवल पे किया, तो अफ़गान हुकूमत इसके बावजूद भी पाकिस्तान से नाराज़ नज़र आती है। अफ़गान हुकूमत पीस प्रोसेस में पाकिस्तान के रोल को किस तरह देखती है? Well, no, Afghan government is not in a tension with Pakistan government. Kabul always wanted good relationship. Even now they want good relationship. And when I was leaving 3 days ago Kabul, just before that I met President Ghani, and his advice and his brief to me was that we need to work through official channels with Pakistan, and we need to work through back channel diplomacy with Pakistan to further improve our relationship. Now, as far as Pakistan's role in peace is concerned, yes, they have helped the Taliban US talks, and that's proven and that's on record, and the US thanked Pakistan for that. We also appreciate Pakistan's role in that, because we want the US and Taliban to reach to a positive conclusion. But as far as the helping the talks between the Taliban and the Afghan government, there we wait for to see a positive role from Pakistan. आप क्या समझते हैं कि जिस तरह ये मुज़ाकरात कतर में हुए, तो इंट्रा अफ़गान डायलॉग के लिए बेहतर जगह कौन सी होगी और इसको कोऑर्डिनेट कौन सी ताकत करेगी? कोई मुल्क करेगा, यूएन करेगा, कौन सा फोरम मुनासिब होगा जो इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करे? These are the two questions that are under discussion and deliberation. They are brainstorming on it. One idea that in the past 2 days of actually today's talks in the conference that I was there was maybe a combined facilitation role by US, UN, and many other countries that are one way or the other involved. Maybe a team of those countries plus UN. That may be a good idea. But this was a brainstorming. This was not a decision. So that question is yet to be addressed. जनाब डॉक्टर मोहम्मद दाऊद साहब, एक्सेलेंसी, हमें वक्त देने और हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो एक अहम जिहादी शख्सियत, हिज़्ब इस्लामी के अपने दड़े के सरबराह और अफ़गान सदर के साबिक मुशीर और मास्को में तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के एक अहम किरदार जनाब वहीदुल्लाह सबाउन हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में पस पर्दा जो लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनमें एक इंजीनियर वहीदुल्लाह सबाउन साहब हैं। इंजीनियर वहीदुल्लाह सबाउन साहब हिज़्ब इस्लामी के अपने दड़े के सरबराह हैं। इससे कबल अशरफ गनी की हुकूमत में मुशीर भी रहें, मुमताज़ जिहादी शख्सियत भी रहें। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, और अब भी जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग का मरहला आएगा तो उसमें जो लोग अहम किरदार अदा करेंगे उनमें एक वहीदुल्लाह सबाउन साहब भी होंगे। मास्को में जो मुज़ाकरात हुए थे तालिबान के साथ, उसमें भी वो शरीक थे। तो वहीदुल्लाह सबाउन साहब से जानते हैं कि अमन के कितने इम्कानात हैं और उसमें उन जैसे लोगों का क्या किरदार होगा। बहुत शुक्रिया इंजीनियर वहीदुल्लाह सबाउन साहब, हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए कि कितना इम्कान है तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात की कामयाबी का, और फिर इंट्रा यानी बैनुल अफ़गान
مذاکرات کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مننه کوم وخت ټایم په خیر راغلی، ستړي مشي. سلامتی هم غواړم. چون جنگ شل کاله کېږي د موجوده جنگ ډېر اوږد جنگ دی او جنگ بین المللي دی. میں بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آپ سلامت رہیں. تقریباً 20 سال سے افغان باہمی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں. جس طرح یہ باہمی جنگ مشکل تھی، اس طرح باہمی صلح کا عمل بھی دشوار ہے. 20 سال سے جاری اس طویل جنگ کے بعد امن کا قیام بھی آسان نہیں. اب یہ افغانوں کے لیے امن کا نادر موقع ہے. امریکہ کی اپنی پالیسی ہے کہ وہ بھی امن اور طالبان سے صلح چاہتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس جنگ میں افغانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا. ایک ہی ماں کا ایک بیٹا طالب اور دوسرا ملی فوج میں تھا، اور دونوں ایک ہی قبرستان میں دفن ہوئے، اور وہ ماں ان دونوں کے لیے رو رہی ہے. ایک ہی گاؤں میں کئی جنازے اٹھتے رہے. ایک کسی طالب کا تھا تو دوسرا کسی ریاستی اہلکار کا. پوری افغان ملت دل گرفتہ ہے. ہر افغان رنجیدہ ہے. تباہی دونوں اطراف ہوئی. ایک طرف امریکہ اور افغان حکومت، اور دوسری طرف طالبان اور ان کے حامی تھے. یہ جنگ 2001 سے شروع ہوئی اور اب 2020 میں بھی جاری ہے. اس جنگ میں ہم نے تقریباً لاکھوں جنازے اٹھائے. شہید تو افغان ہی ہوئے. طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے بھی لوگ قربان ہوئے. طالبان ہو یا ملی فوج، تھے تو دونوں ہی افغان. اس طرح غیر ملکی بھی مارے گئے، انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑا. کم و بیش 24,000 امریکی فوجی مارے گئے، 20,000 کے قریب معذور ہوئے. اسی طرح سالانہ $50 ملین خرچ ہوتا رہا. اس سے پہلے بھی ہم نے امن قرارداد منظور کی تھی، جس کے تحت امریکی افواج نے افغانستان میں 10 سال قیام کے بعد انخلا کرنا تھا، جیسا کہ وہ اعلان بھی کر چکے تھے. لیکن پھر اس جنگ کی وجہ سے ڈاکٹر اشرف غنی کے دور میں مجبوریاں آڑیں آئیں اور 7,000 غیر ملکی افواج واپس بلائی گئیں. وہ اپنی توپوں، ٹینکوں اور جہازوں سمیت واپس آ گئے، اور ایک بار پھر شدید جنگیں شروع ہوئیں، اور امریکہ نے افغان صوبوں اور امرغاب میں اپنی افواج بھجوا دی. ننگرہار میں داعش کے مراکز بن رہے تھے، جس کو بنیاد بنا کر امریکہ نے بھی اس قرارداد کو پس پش ڈال دیا اور اپنی افواج بھجوا دی. دا مسائل باعث شو چې په دې کې امریکا بھی ته حضور ولري علاوه د قرارداد نه. اچھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ امن لانے میں مخلص ہے، اور کیا طالبان بھی مخلص ہیں؟ دواړه غواړي سوله، خو د سولې لپاره تاسو به پوهیږئ چې څوک چې سوله کوي نو هغه په سوله کې امتیاز غواړي. دونوں فریقین امن چاہتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ امن کے خواہاں بھی ہیں، مگر امتیازی حیثیت اور فتح بھی چاہتے ہیں. یہ بھی طالبان کے لیے ایک کامیابی ہے کہ امریکہ جیسی طاقت طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے. طالبان جو کہ افغانستان کی ایک جماعت ہے، اور امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، جس سے افغانستان جو کہ ایک مملکت ہے کا کسی بھی لحاظ سے کوئی موازنہ نہیں. اس کو آپ افغانوں کا اعزاز کہیں یا طالبان کا، کہ امریکہ مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ اور طالبان دونوں امن اور استحکام چاہتے ہیں. ہم طالب او هم امریکا افغان حکومت بھی چاہتی ہے صلح. حکومت هم خپل امتیاز غواړي، حکومت هم سوله غواړي. حکومت بھی اپنا وقار اور برتری چاہتی ہے. حکومت بھی صلح اور امن چاہتی ہے. حکومت اپنا اثر چاہتی ہے. سیاسی جماعتیں اپنا اثر رسوخ چاہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ طاقتور کی ہو، ظالم کی ہو یا مظلومانہ، آخرکار حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے. یا ظالمانہ ہو یا مظلومانہ جنگ نہ وروسته به سوله کیږي. ڈاکٹر اشرف غنی نے ابھی جو الیکشن ہوا اس میں اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کیا ہے، تو آپ دوسری طرف کھڑے تھے الیکشن میں، تو اگر اشرف غنی اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کر لیتے ہیں تو پھر سوال یہ کہ طالبان اس سسٹم میں کیسے ایکوموڈیٹ ہوں گے، اور کیا اشرف غنی کے صدر ڈکلیئر ہونے سے پھر انٹرا افغان مذاکرات کی کامیابی کا امکان ختم نہیں ہو جاتا؟ نه، خو اصلي جنگ اول د امریکې او طالب دی چې د دې دوړو توافق وشي.
جنگ کے اصل فریق طالبان اور امریکہ ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، مگر اس میں ہمارے کچھ شرائط ہیں۔ ڈاکٹر اشرف غنی اور دیگر سیاسی قائدین کا مشورہ یہ تھا کہ پہلے کم از کم جنگ بندی ہو جائے تاکہ شدت میں کمی ہو سکے۔ بے شک یہ 10 دن کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے یا پھر مذاکرات کے جاری رہنے تک ہو تاکہ حالات کی سنگینی کم ہو سکے۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ طالبان نے شدت میں کمی لانے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جو کہ ایک خوشائند قدم ہے، جس پر امریکہ، افغان حکومت اور سیاسی قائدین سب خوش ہیں، اور انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے وہ قائدین جو جنگ کے حق میں نہیں ہیں، جو صلح اور امن چاہتے ہیں، وہ بھی خوش ہیں، کیونکہ طالبان زعماء بھی جنگ نہیں چاہتے۔ ان کا دل بھی دکھتا ہے کہ ہمارے افغان بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ ان کی طرف سے جنگ بندی پر اتفاق ہوا تو ہماری طرف سے بھی اس پر اتفاق ہوگا۔ اس کے بعد اشرف غنی صدر افغانستان بنتے ہیں یا کوئی اور صدر بنتا ہے، یا یہ انتخابات اگلے مرحلے میں جاتے ہیں، یا پھر اشرف غنی ہی کا بطور صدر اعلان ہو جاتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں پہلا کام ہوگا کہ وہ لویا جرگا بلا کر مشاورت کا آغاز کریں، یا امن شورا کا اجلاس بلائیں اور اسے اختیار دیں، کیونکہ سابق صدر حامد کرزئی نے بھی امن شورا کا اجلاس 2009 اور 2012 میں صلح کے لیے لویا جرگا منعقد کیا تھا۔ وہ لویا جرگا امن عمل کے لیے ایک لائے عمل ترتیب دے۔ ہو سکتا ہے وہ مطالبہ کریں کہ صدر مستعفی ہو جائیں تاکہ امن عمل آگے بڑھ سکے۔ جرگا نے جو بھی فیصلہ کیا وہ صدر کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ ایک افغان رہنما کی حیثیت سے ابھی جو پیس پروسیس میں پاکستان کا رول ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور آگے بین الافغان مذاکرات میں پاکستان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ پاکستان خو زمونږ یو دوست ورور اسلامی ملک دی، دواړه اسلامی جمهوریتونه دي او دواړه ورونه او عزیزان او پاکستان ہمارا دوست اور برادر اسلامی ملک ہے، دونوں اسلامی جمہوریاں ہیں اور پاکستان اور افغانستان میں بہت سی مشترکات ہیں۔ ہم پاکستان سے جدا نہیں ہوں گے۔ مسائل اور مشکلات ہر ملک میں ہوتی ہیں، ہمارے درمیان بھی مسائل اور مشکلات رہی ہیں۔ ہمارے درمیان میں کچھ ایسے حالات ضرور پیش آئے ہیں کہ پاکستان کی طالبان سے بھی دوستی تھی، امریکہ سے بھی تعلقات تھے۔ جب ایسی مشکلات سامنے آئیں تو پاکستان پر دباؤ آیا۔ ایسی مشکلات تھیں کہ ایک طرف طالبان بھی دوست تھے اور دوسری طرف امریکہ بھی دوست تھا۔ پاکستان کے لیے مشکل تھا کہ دونوں کے درمیان کیسے کوئی کردار ادا کرے۔ پاکستان کو ہم سے زیادہ مشکل کا سامنا تھا۔ ہماری مشکلات دوسری قسم کی تھیں، ہمیں اندرونی مشکلات کا سامنا تھا، ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا تھا جیسے پاکستان کو نہیں تھا کہ ایک عالمی طاقت کے ساتھ دوستی ہو اور پھر اس سے اختلاف پیدا ہو جائے اور اس کی افواج آپ کے گرد جمع ہو رہی ہوں۔ ہمیں طالبان کی طرف سے مشکلات تھیں، مگر پاکستان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پاکستان بھی امن چاہتا ہے۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی، یہ سب امریکہ کے بھی دوست ہیں اور افغانستان کے بھی دوست ہیں، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ فعال اور مثبت کردار پاکستان نے ادا کیا۔ پاکستان ہمارا دوست اور پڑوسی ہے، ہمارا اسلامی اور قومی رشتہ مشترک ہے۔ میرا پاکستانی اداروں سے توقع ہے کہ جیسے انہوں نے افغان جہاد میں اپنا کردار ادا کیا تھا، ایسے ہی اب امن کے قیام میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں افغانستان امن کی طرف گامزن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس امن عمل میں پاکستان کا حصہ زیادہ ہو۔ سب اس عمل میں شامل ہیں۔ اوس افغانستان ته سوله را روانه ده، نو باید چې په دې سوله کې پاکستان بے برخې نه وي۔ ٹھیک، لیکن جو پروسیس ابھی تک ہو رہا ہے اس میں چین، روس اور یہ ممالک انوالو نہیں ہیں، اور کیا ان کی انوالومنٹ کے بغیر پائیدار امن آ سکتا ہے؟ ټول پکې دي، اچھا، امریکا، اروپا سم خبرې کړي، روس هم خبرې کړي۔ سب اس عمل میں شامل ہیں۔ امریکہ نے چین، روس، ایران، ہندوستان، انڈونیشیا، سعودی عرب، عرب امارات، ترکی سب سے بات کی ہے۔
इस तरह 4 फरीकी, सह फरीकी, 2 फरीकी मुज़ाकराती अमल भी होता रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सबके साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए हैं कि सब अपने दलाइल पेश करें। कोई कहता है कि दाइश का मसला है, कोई कहता है कि अमेरिका इनखला नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि सबका मौक़िफ़ सामने आए। अमेरिका चाहता है कि सबका मौक़िफ़ सामने आए। इंजीनियर वहीदुल्लाह सबाउन साहब, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो पस पर्दा इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाली एक अफ़गान शख्सियत हमारे साथ होगी और उनके साथ बात करेंगे कि वो पीस प्रोसेस को किस नज़र से देखते हैं। नाज़रीन, काबुल में मौजूद शख्सियात में इस वक्त अफ़गान पीस प्रोसेस में जो शख्सियत सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वो हैं डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल साहब। हमें शर्फ बख्शा है, उन्होंने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, कितने इम्कानात हैं इस मरतबा अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात की कामयाबी का? Well, first of all, you were extremely kind. I will not take all those credits to myself, but I've been active. No, you deserve more than this. Voluntarily. There is a unique opportunity, no doubt about it. Unique opportunity in the sense that what the Americans have on the table to get the Taliban interested to get into the peace talks is significant. That's the withdrawal of the U.S. forces from Afghanistan and other forces from Afghanistan. There is also a unique opportunity in Afghanistan. The broader political leadership, including the government, all support the peace process. Leaders who, for right or wrong reasons, even a couple of years ago, were opposed to peace with the Taliban, now strongly support it. And there's also a unique opportunity within the Taliban. The Taliban commanders, the leadership council, both political and the military, strongly support the process that is led by the political office in Qatar. Never before has so many elements come together, and as a result of this, in the past 1 year, there has been significant interaction not only between the U.S. and Taliban, but also significant interaction between Taliban and the rest of the Afghan leadership. And as a result, today we are at a place in which we can claim that the U.S.-Taliban talks, which is the first important step to open up the process for intra-Afghan negotiations, are almost at a conclusion. Of course. At a conclusion? Almost at a conclusion. Almost I say because once before it was at this stage and it was disrupted, but I'm more confident today than I was. कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि बाकायदा मुआहदे का ऐलान हो जाएगा, उस पर दस्तखत हो जाएंगे, ये खुशखबरी पाकिस्तानी और अफगानों को सुनने को मिलेगी? कब तक एक्सपेक्टेड है? This will be purely my own prediction. I do hope and expect that by the end of this month, which is February, or beginning of March, which is just around the corner, we will witness the signing of the agreement between the Taliban. पिछली मरतबा भी हम इस स्टेज तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने मामला सारा ख़राब कर दिया। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का कोई सेगमेंट इसको तो वीटो नहीं करेगा, या तालिबान की तरफ से तो कोई ऐसी हरकत नहीं होगी? Back then, most of the focus was on the document, on the agreement. They concluded this, not so much on the environment. Since then, there's been a lot of work on the environment, so that the environment is ready for it. For example, reduction of violence. Already there is significant reduction of violence in Afghanistan, thanks God, on all sides. There's a further commitment to the reduction of violence. There's a commitment for an immediate start of the intra-Afghan negotiation after the signing of this. And then there is also agreements and commitment to other trust-building measures, such as exchange of prisoners, for example, and other trust-building measures which were not as specified back then as they are today. That's why there are still, of course, incidents take place. Yesterday in Kabul, 2 explosions took place, unfortunate as they are. But such incidents previously was certainly cast a shadow over the talks,
now there's way more preparedness how to handle, so that whether it's done by spoilers or by whatever other motives, that such incidents do not disrupt the talks from the path on which they are. डॉक्टर साहब, ये जो प्रिजनर की रिहाई हो गई, इस तरह के बहुत सारे मामलात वो अफ़गान हुकूमत और डॉक्टर अशरफ गनी से मुतालिक हैं, तो क्या अमेरिका और तालिबान के माबैन जो कुछ तय पा रहा है, अफ़गान हुकूमत उसमें ऑन बोर्ड है, और क्या डॉक्टर अशरफ गनी इस प्रोसेस को सबूताज नहीं कर सकते? Well, no, you can read this from President Ghani's statement yesterday after the U.S. Secretary of State, Mr. Pompeo, called both Dr. Abdullah and Dr. Ghani. And afterwards, there was a statement by Dr. Abdullah, the CEO, and a statement by President Ghani, which were positive and supportive. And there was a statement today by President Ghani's Ministry of Peace, in which there was a reference to the prisoners and in a flexibility and openness to it, that they certainly is taken as a trust-building measure. But then there are prisoners both sides. It's not just the government holding Taliban prisoners, there are also Taliban government our soldiers. डॉक्टर अशरफ गनी का इलेक्शन काफ़ी मुतनाज़ रहा, बहुत कम टर्न आउट रहा, Yes. मुखालिफिन ने धांधली के भी इल्ज़ाम लगाए हैं, तो इसमें अगर वो अपने आप को दोबारा विनर डिक्लेयर कर लेते हैं, तो फिर तालिबान को निज़ाम में कैसे एकोमोडेट किया जाएगा? I think whether, you know, the peace talks have been sought for many, many years. It could have been at this stage 5 years ago or 4 years ago, in which there was no election. The President Ghani was just in office, and he was open to talk in peace talks. Peace talk may as well require not only power sharing, but perhaps other measures, and that openness I see not only within the President Ghani, but in the broader political leadership in Afghanistan. The flexibility has to be there. Peace is above everything. Peace is above personal interests. Certainly that doesn't mean that we shouldn't be safeguarding the institutions, in fact strengthening them through peace talks. But then when it comes to possessions of individuals, that's the smallest price that an individual can pay in return for a durable peace in the country. ये जो मेरी तालिब इल्माना राय है कि जितने अमेरिका और तालिबान की डील आसान थी, उतनी इंट्रा अफ़गान की मुश्किल होगी। तो क्या काबुल में जो लोग बैठे हुए हैं, या सिर्फ अशरफ गनी नहीं है, उधर हामिद करज़ई साहब हैं, रशीद दोस्तम है, उस्ताद मुहक्किक है, बहुत सारी और शख्सियात है, उस्ताद सयाब है, तो ये जो कुछ तालिबान के साथ तय होने जा रहा है, वहाँ पे भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई विलिंगनेस है? और तालिबान के साथ इंट्रा अफ़गान में मुज़ाकरात कौन करेगा? हुकूमत को तो आप लोग तस्लीम नहीं करते। Well, always when you listen to observers and commentators, they will question unity within the Afghan leadership and or the lack of it, and how that could pose difficulties. But again, we have plenty of examples. When an opportunity presents itself and they are in a situation in which they deal with it, they have shown a lot greater unity. I'll remind you 2002, the first lawyer Jirga, the emergency lawyer Jirga, the war had just concluded. There wasn't much of a coordination, but when the first lawyer Jirga came, within a week, the whole lawyer Jirga, through consensus, elected President Karzai. President Karzai, who belonged to Kandahar, the Pashtun, which was the headquarters or the capital of the Taliban. And then in 2004 and 5, or end of 2004, was the constitutional lawyer Jirga. Any country, you mentioned within 2 weeks, a constitutional process could not be concluded, without exceptions. It will take years. But in Afghanistan, when they were put on spot within 2 weeks, they agreed on the constitution. Here as well, when the opportunity, before the opportunity presents itself, there will be different positions. I mean, there would be more political positions. But when the opportunity presents itself, then they will act responsibly and will show more unity, as if they've shown in the past many processes, many different lawyer Jirgas in this as well, and you will see conclusion
to this. The Bonn talks was again, there were different groups in the Bonn, but within days there was a conclusion in Bonn as well. So this as well as based on those experiences and based on the willingness and the desire of the population in large for peace, there will be, all the politicians, I'm pretty certain, will act responsibly in a unified manner, and they will lead to a result. अफगान कॉन्फ्लिक्ट में दर्जनों ममालिक इन्वॉल्व है। Yes. रूस से लेके इंडिया तक, पाकिस्तान से लेके ईरान तक, सबकी अपनी अपनी प्रॉक्सीज भी हैं। Yes. ये जो अभी अमेरिकन और तालिबान का जो कुछ हो रहा है या अब इंट्रा अफगान जो कुछ होगा, तो पड़ोसी ममालिक रूस, चीन, ईरान जैसे ताकतें भी इसमें ऑन बोर्ड हैं, और अगर वो नहीं हैं तो क्या उनका फिर हक नहीं बनता कि वो सबूताज करें? Yeah, no doubt the region has played both, sometimes constructive role and a lot of the times not so constructive. And they've used the situation in Afghanistan for proxy rivalries, which is unfortunate. But then there were times in which, for example, again, I'll give you the example of 2002, 3, 4, all these countries, India and Pakistan had their differences, and yet they were going in the same lines in those years. Iran and Saudi and Iran and US had differences. Russia and US had differences. China and US had differences. And yet if you look at 2002, 3, 4, they were all supportive of stability in Afghanistan. Already we see, for example, a lot more stark differences between Russia and the US. And yet on Afghan issue you see a convergence. Between US and China you see a convergence. Pakistan is no doubt playing constructively. We don't have any evidence to show that Iran is out there to sabotage, knowing that the relationship between Iran and the US is not good. But the first precondition is the domestic environment itself. Afghans need to show more unity, Afghan needs to lead, Afghan needs to convince the neighboring countries, no matter what, we are going to lead this to peace. Then there will be more encouragement within the regional countries to be supportive. But in addition to that, I think they need to be encouraged. Certainly by big powers they need to be encouraged. Pakistan could certainly play yet a greater role to support peace. ये तो आप फ्यूचर के रोल की बात कर रहे हैं। माजी में पाकिस्तान के किरदार पे एतराज़ भी होता रहा अफ़गानिस्तान की तरफ से। इस वक्त जो तालिबान और अमेरिका के मामलात जो अभी तक तय पाए या जो मुज़ाकरात हुए, आप सब साइड से राब्ते में भी हैं और जानते भी हैं, तो इस दौरान तो अमेरिकन साइड से भी पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया गया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का अभी तक जो प्रोसेस हुआ है उसमें रोल पॉजिटिव था, कंस्ट्रक्टिव था? Well, there's phase 1. This is not yet even a peace negotiation. This is the Taliban and the US negotiation. But this is the most important step. So Pakistan has been constructively involved with the US in the facilitation, no doubt about it. But of course, it also needs to be constructively involved in the next phase when the real negotiation begins, when the intra-Afghan negotiation begins. And that's where we expect Pakistan to play its utmost constructive role, regardless of what has happened in the past. Of course, the past is not a very... प्रोसेस होगा, उसमें आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई रोल अदा करना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि एक दो धारी तलवार है पाकिस्तान के लिए, रोल प्ले करे तो फिर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगता है, ना करें तो फिर अदम ताउन का इल्ज़ाम लगता है। तो इंटर अफगान के लिए आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से? Sometimes the best role is not to play any role. Sometimes certain neighboring countries that could include Pakistan could not bring peace, no doubt, because peace has to be negotiated between the Afghans there, but could prevent peace, could create troubles. So in that situation, playing no role is probably, again, playing an important role. Or seeing to the future of Afghanistan with positivity, that in peace in Afghanistan, there is not only something really great and good for Afghans, but there is also something really good and great for Pakistan. And the same view needs to be held in other regions, but Pakistan is certainly the closest
with direct consequences either way for this country. So with that view that peace in Afghanistan is seen not only something for us but something for Pakistan and something for the region. आखिरी सवाल, इस दौरान अगर पाकिस्तान कोई रोल प्ले करेगा तो अभी आपने ख़ुद फरमाया कि जो अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात थे उसमें पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, और इंट्रा अफ़गान के सिलसिले में भी आप पाकिस्तान से रोल प्ले करने का तकाज़ा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस दौरान काबुल में कायम अशरफ गनी साहब की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रवैया बड़ा सख्त है, मुखालिफाना बयानात आ रहे हैं। तो वो फिर क्या है, अगर पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया जा रहा है तो फिर ये काबुल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ें क्यों आ रही है, और ये उस रास्ते को बंद नहीं करेगा कि पाकिस्तान ताउन करे? Yeah, first of all, like I said, it's the support so far to the process of Pakistan support so far is to that U.S. Taliban process. Government and the broader politicians have not yet been involved because intra-Afghan has not yet begun. The negativity and mistrust still is deep there. The war in Afghanistan still continues, no doubt about it. And in a tough situation, you cannot expect really things to change overnight. But we need to look into, first of all, the broader view, political view, both here and there. The broader view should be that, first of all, we are in the 21st century, still these countries are following policies of the past century. We need to get into the 21st century. We need to be forward-looking. We need to put past behind us. The immediate past is not a very pleasant past. It is full of grievances, it's full of mistrust, it's full of evidences, some right and some wrong, no doubt about it. But I think we need to be forward-looking. And forward-lookingness, as we make progress with Taliban for peace, maybe simultaneously, maybe after, we need to have a very open and candid discussion with Pakistan as well, that we want the best and closest of relationship with Pakistan as a sovereign, independent country. But of course, a country that is the closest of neighbor with multidimensionality of relationship, in that we need to strengthen. डॉक्टर उमर रज़ा खिलवाल साहब ने और हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अफ़गानिस्तान रियल मानों में अमन का, खुशहाली का और सुकून का गहवारा बने, उसका घर बने, और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हकीकी मानों में भाई बने, ऐसे भाई जो एक दूसरे के दुख और सुख को अपना दुख और सुख समझे। आज के इस ख़ुसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।